Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be discussing about another NBFC. इसका नाम है Credit Axis Grameen, right? And as the name Grameen suggests, this NBFC is focused completely in the rural economy or the rural side of this nation, right? So अगर आप देखोगे टायर 6, टायर 7 cities, फिर एकदम एकदम गांव-गांव में जाके ये लोग loans देते हैं. So Credit Axis Grameen का अगर आप लोन बुक देखोगे, it's actually pretty big. It's actually north of 20,000 crore. And अगर आप देखोगे in the last 15-20 years, it's been one of the most consistent NBFCs in this country. तो अगर मैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का थोड़ा बहुत बताऊं, सो इनका जो मेन कोर स्टेट्स है, अगर मैं बताऊं कि लाइक जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, these are the core states जहां पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का एक अच्छा सा प्रेजेंस है. But of course, they are trying to scale up and trying to become a pan-India and NBFC business. इसके वजह से you would look at they are growing more and more into states like Gujarat, Bihar, UP, Orissa, Jharkhand and Rajasthan. Okay, so अगर आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का बिजनेस मॉडल को थोड़ा बहुत देखोगे, तो वहां पे अब नया स्टेट्स में कब क्यों जाते हैं कोई एनबीएफसी? बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर बेस. गॉट इट? सो मैनेजमेंट ने क्या बोला है कॉन कॉल में, दैट दे कैन ग्रो द बुक, they can double the book in the next 4 to 5 years. So from 20,000 crore के बुक से लेके 40,000 crore का बुक in the next 4 to 5 years आराम से हो सकता है. That means the book will grow at around 15 to 18% का CAGR. दूसरे साइड में अगर मैं देखूं कि उनका जो रिजल्ट आया है Q1 में, वो बहुत ही बढ़िया है. सो उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट ग्रू 40% ऑन अ YOY बेसिस इन Q1, राइट, वर्सेस द गाइडेड नंबर ऑफ 20 to 25%. उन्होंने जो लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस दिया इन FY24, सो इन FY24 देयर गाइडेड ग्रोथ ऑफ देयर लोन बुक इज 20 to 25% हायर होगा देन FY23 का लोन बुक, राइट? बट Q1 में दे ग्रू एट 40% ऑन अ YOY बेसिस, which is very good. दूसरे साइड से अगर आप देखोगे, expanded into newer geographies, and I already talked about the newer territories that Credit Axis Grameen is going. तो अगर आप देखोगे इनका कस्टमर बेस भी grew 20% on a YOY basis, right? So that's also a good sign. If I talk about the ROE का नंबर, which is very very good, 26%. So अगर आप देखोगे, मुझे अच्छा फिनेंशियल्स तब लगता है, एनबीएफसी तब लगता है जब इनका ROE नॉर्थ ऑफ 20% होता है. जैसे हमने IIFL का कवर किया, फिर उसके बाद हमने अरमान फाइनेंशियल्स कवर किया. यू सी दोस टू कंपनीज आल्सो हैव एन ROE नॉर्थ ऑफ 20%. IIFL का 20 है, अरमान का तो 37% है, बट ऑफ कोर्स अरमान वर्क्स एट अ वेरी वेरी स्मॉल बेस ऑफ 2000 करोड़ का AUM, राइट? बट यहाँ पे इट्स 20,000 करोड़ का AUM, बट उस पे भी 26% का इनका है ROE का नंबर. तो अगर आप इनका ROE का नंबर भी देखोगे, दैट्स अराउंड 5.5 to 6%. सो इसका क्या मतलब, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूशन और शेयर होल्डर रिटर्न बना के दिया है, इसीलिए तो ROE का नंबर इतना हाई है. If you look at the performance of Credit Axis Grameen over the last 5-6 years, जबकि we had demonetization, GST, COVID, right, and all the nonsense that happened, right? Credit Axis Grameen, just like Arman Financials, never posted losses. Of course, इनका ROE का नंबर फ्लक्चुएटेड, राइट? बिकॉज बुरे टाइम में, कोविड के टाइम, इन सबको ज्यादा से ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा, मोरेटोरियम में देना पड़ा अपने कस्टमर्स को, राइट? इसके वजह से द ROE नंबर वेंट डाउन, बट ये कभी लॉसेज नहीं खाए, राइट? तो इट शोज दैट द बिजनेस मॉडल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ऑफ कोर्स अगर मैं इनका बुक का बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ द लोन बुक इज माइक्रो फाइनेंस बुक. तो मतलब ये लोग मेजॉरिटी अनसिक्योर्ड बुक ही है, और ये लोग एकदम, जैसे मैंने बताया कि लाइक एकदम टायर 5, 6, 7 सिटीज गांव में जाके ये लोग लेंडिंग करते हैं ऐसे कस्टमर्स को जिनका से फॉर एग्जांपल आज कोई बैंकिंग कोई एक्सेस नहीं है. दूसरे पॉइंट ये है कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट इज, उनके ऐसे बहुत ऐसे जिनको ये लोन्स देते हैं, उनके घर का एक मेंबर को ये लोग नौकरी देते हैं अपने कंपनी में. तो आप सोचिए, दिस इज सच ए फैंटास्टिक इनिशिएटिव ना. बिकॉज आप अगर सोचो, आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के एक एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो ऑलरेडी आपका गांव में आपका एक रेपुटेशन है, बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइज बिजनेस का एक एम्प्लॉय हो, राइट? तो उसके बाद अगर लेट से आपके घर वाले को अगर वही एनबीएफसी पैसा देते हैं, तो आप आपका इज्जत बचाने के चक्कर में आप उस लोन को पक्का चुकाओगे. So अगर आप देखोगे, this is one of the things that probably like separates Credit Axis Grameen from the remaining NBFCs and the small finance banks. I believe other financial should also do this more often, right? Because वहां पे क्या होता है ना, आप जितने गांव में जाओगे वहां उतना शान और इज्जत की बात आती है, राइट? एंड ऑफ कोर्स डिफॉल्ट करने के बाद किसी का इज्जत रहता नहीं है. तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया
कि जिनके जिनके घरों में लोन देते हैं उनके घर का एक मेंबर को जॉब भी दे देते हैं, राइट, सो दैट वो मेंबर कुछ भी करके वो पैसा वापस लाता है फॉर द एनबीएफसी, दैट इज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ओके, तो अगर मैं थोड़ा कॉस्ट टू इनकम का बात करूं तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी द कॉस्ट टू इनकम इज अराउंड 30%, और गोइंग फॉरवर्ड द मैनेजमेंट सेज दैट कॉस्ट टू इनकम कैन गो अप अ बिट टू 34-35%। अब थोड़ा सा हाई कॉस्ट टू इनकम कैन अफेक्ट योर आरओई नंबर एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एज आई टोल्ड यू राइट, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर कोर ज्योग्राफीज, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू 5-6 स्टेट्स का नाम जहां पे ये लोग एंट्री मार चुके हैं, और वहां पे देयर इज लाइक इवन स्कोप फॉर पेनिट्रेशन, बिकॉज इंडिया में माइक्रो फाइनेंस का पेनिट्रेशन इज वेरी वेरी लो, राइट, एंड दे आर टारगेटिंग 4-5-6 स्टेट्स एट वन गो, राइट। इसका मतलब क्या, देयर विल बी मोर खर्चा, लाइक मोर एक्सपेंसेस, मोर कॉस्ट टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग ब्रांचेस, second is towards more technology, and third is के like, and of course अगर आप नया जगह में जाके you're opening a branch, you have to hire people up front, got it, तो उनका सैलरी देना, राइट, तो वो भी एक खर्चा है। तो ये सब के लिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये बोल रहे थे गोइंग फॉरवर्ड हमारा कॉस्ट टू इनकम विल बी अ बिट ऑन द हायर साइड, बट हैविंग सेड दैट, अगर आप पूरा माइक्रो फाइनेंस का स्पेस देखोगे, इवन आज का अगर मैं नंबर देखूं, अ कॉस्ट टू इनकम ऑफ 30% इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड नंबर। ओके, तो ये हो गया। तो एक और सवाल जो आता है कि अगले साल इन 2024 देयर विल बी द इलेक्शंस, राइट, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑन से फॉर एग्जांपल क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, बिकॉज बहुत एनालिस्ट के दिमाग में ये आता है कि लाइक इलेक्शन ईयर है, लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट ने बता दिया कि लाइक लोन्स नहीं चुकाना है, सो इसके लिए व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के लाइक 2024 इज द जनरल इलेक्शन ईयर, राइट, एंड हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड, दे सेड कि लाइक कस्टमर्स को पता है, आई मीन व्हेन आई से कस्टमर आई मीन द बोरोवर्स ऑफ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जिनको जिनको ये एनबीएफसी पैसा देते हैं, मतलब बोरोवर्स को पता है दे हैव टू पे इट बैक, राइट, थोड़ा आगे हो थोड़ा पीछे हो, दे हैव टू पे इट बैक, राइट, तो दे कांट जस्ट डिफॉल्ट फॉर द सेक ऑफ डिफॉल्टिंग, राइट। तो इलेक्शंस पहले भी आ चुके हैं ना, इन द लास्ट 10, 15, 20, 30 इयर्स में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हैज सीन सो मेनी स्टेट इलेक्शंस इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सो मेनी जनरल इलेक्शंस, राइट, लेकिन बिजनेस में एसेट क्वालिटी उतना नहीं चेंज हुआ इलेक्शन ईयर में, राइट। सो अगर आप जाके उनका हिस्ट्री में देख सकते हो इन द लास्ट बिग इलेक्शन ईयर्स इन 2014, 2009, तो आप देखोगे उतना कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। सो बेसिकली व्हाट दिस एनबीएफसी इज ट्राइंग टू से इज के लाइक इट्स मोर ऑफ अ हल्ला गुल्ला, कि लाइक इलेक्शन के टाइम क्या होगा, लोग शायद मतलब किसानों को शायद एकदम लोन माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बिकॉज किसानों को भी पता है कि पैसा कभी ना कभी आपको तो वापस करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए इलेक्शन और इलेक्शन के डर से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इजंट टेकिंग एनी हेडेक एज ऑफ द एंड ऑफ Q1 FY24। अब आगे के ऑफ कोर्स इलेक्शन के जितने हम पास जाएंगे, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन तो मैनेजमेंट को कोई ना कोई तो फेंकता ही रहेगा, एंड लेट्स सी कि मैनेजमेंट आगे क्या बोलता रहते हैं। सो दैट इज द अदर थिंग, द वन प्लेस वेयर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज एक्चुअली अ बिट ऑफ थोड़ा सा अफ्रेड है इज तेलंगाना, राइट, फॉर माइक्रो फाइनेंस। दे एक्चुअली बिलीव कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर माइक्रो फाइनेंस। अगर आप पहले भी जाके देखोगे इन द हिस्ट्री, माइक्रो फाइनेंस बहुत सारे कंपनीज बंद हो चुके थे इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री बैक इन 2012, 2014 के टाइम, राइट। सो माइक्रो फाइनेंस के लिए तेलंगाना एंड आंध्र आर नॉट द बेस्टेस्ट ऑफ प्लेसेस, okay, but also having said that, the credit axis Grameen sees a lot of opportunity and scope as well in that whole state and the whole territory. So इसी वजह से what they're trying to do is they're trying to set up branches, लेकिन they are setting up branches at a very very slow pace. वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि like okay हमको घुसना ही नहीं है because of the past problem. वो ये बोल रहे हैं वी आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, लेट्स ओपन अ फ्यू ब्रांचेस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, उसके बाद हम कुछ और ब्रांचेस खोलेंगे और उन ब्रांचेस के परफॉर्मेंस से वी कैन ओपन मोर ब्रांचेस, और इस तरह से दे वुड वांट टू ग्रो इनटू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स in a very calibrated manner. So that's probably about it. I also talked about the AUM ka growth, right? Because they gave the guidance in FY24 over FY23. Their credit cost guidance is between 1.6 to 1.8% के आसपास. They are maintaining, मतलब वो नंबर वैसे ही है आसपास उनका। दूसरा पॉइंट ये है कि like they have guided for a loan book growth of 25%, loan book growth of 25%, AUM growth of 25% in FY24 over FY23. And in the con call, the management even expanded that horizon and said that they can easily grow 25% CAGR for the next 2 years, right? So इसका क्या मतलब? इसका मतलब, and of course, like just like the other microfinance companies and the banks,
Credit Axis Grameen also doesn't see any immediate problems going forward when it comes to the credit market. Got it? So that's why they are like bullish when it comes to, say, for example, giving a guidance of 20-25%. मतलब हमने जो recently जो सारे NBFCs किए, like Mass Financials, IIFL, Arman Financials, Credit Axis Grameen, the small finance banks and everything, everybody is giving a guidance for FY24. So when you see most players in a space are giving you guidance going forward, that means there is a tailwind in that space. And of course, we understand that we are in a time when there is a credit upcycle in this country. There is a manufacturing boom in this country. There is a lot of public spending. Matlab public means like government spending, as well as a lot of private consumption as well. Right. So that's more or less about it. The ROE number is very good, as I pointed out, 26%. Right. I need my financials to have an ROE number not of 20%. It means I know that my financial is aggressive in nature. Right. And of course, like agar mera ROE 20, 25, 30% hota hai, then only I can think of paying, a price to book of 4.5. Right. I mean, it's not a stock recommendation for Credit Axis Grameen, but I'll tell you my investment philosophy. It becomes very difficult for me to, pay a price to book of 4 or price to book of 6 when the ROE number is 15 to 17, 18%. इससे क्या होता है कि I know कि like मेरा upside can be limited in that stock, right? Even though the scope is great, that is the kind of problem that I see mostly in the affordable housing finance space, right? But of course, like ये मैं आज का बता रहा हूँ, आगे का क्वार्टर में अगर उन्होंने अपना ROE का नंबर बढ़ाया, if they can increase the gearing ratio, right? Because ROE is equal to ROA into gearing, that is debt to equity, right? So if the gearing goes up, the ROA number goes down and the ROE number goes up. करेक्ट, ये मैंने और भी बहुत सारे वर्कशॉप्स में ये एक्सप्लेन किया है, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग लाइक टू मच इनटू इट. So that's मोटा-मोटी about Credit Axis Grameen, right? So it's another good NBFC जो historically has been good. Like see, businesses like Credit Axis Grameen और Arman और IIFL have been historically very good. मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ 2 साल में आया है वापस because of micro finance का boom. नहीं, I am covering these companies because these companies have even they even did very well during the last down cycle as well, back in 2018 से let's say COVID का डेप्थ तक, राइट? जब इतना DHFL ILFS का क्राइसिस हो रहा था, उस टाइम में भी Credit Axis Grameen, IIFL, if you look at Mass Financials, if you look at Arman Financials, they have held their own, राइट? इनका ROE नंबर कभी गायब नहीं हुआ था, ये लोग कभी लॉसेस में नहीं गया था. ऑफ कोर्स उस टाइम पे ये लोग थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड होता है देन द बेहेमोथ्स लाइक एन HDFC बैंक और a Kotak Mahindra Bank, but then you have to take all these things with a pinch of salt. On that note, if you have any doubt on any microfinance companies, you let me know in the comment section. Thank you so much for listening.